मानो आओ मैं तुम्हें उस दरिंदे बाप का वाक़या ना सुनाऊं, उस दरिंदे बाप की कहानी ना सुनाऊं। 7 दिन की बच्ची ने, 7 दिन की मजलूमा ने, 7 दिन की रहमत ने बाप के घर में आंख खोली, जालिम बाप के घर जन्म लिया। नर्स ने मासूम बच्ची को लेकर बाप को मुबारकबाद देते हुए बाप के हाथ में थमाया। बाप ने बच्ची को देखा नहीं था, सिर्फ सुना था कि मेरी बच्ची पैदा हुई है। तो बाप गुस्से से लाल पीला हो गया, गुस्से से आग बगोला होकर मासूम बच्ची को, मासूम मजलूमा को बेड पर फेंकते हुए कहा, मुझे बेटी नहीं, मुझे तो बेटा चाहिए, मुझे बेटी नहीं चाहिए। बच्ची की मां के ऊपर लाल पीला होने लगा, गुस्से से आग बगोला होने लगा। ओ कमबख्त, ये तूने क्या कर डाला? तूने सपनी को जन्म कर दिया, तूने सपनी को पैदा कर दिया, तूने मुआशरे में मेरी नाक कटा के रख दी। अब लोग मुझे क्या कहेंगे कि इस बदबख्त के घर बेटी ने जन्म लिया। मां ने कहा, ओ नादान, इसमें मेरा क्या कसूर है? ये तो मेरे अल्लाह की देन है, और मेरा क्या कसूर है? मैंने तो काफी एहतियात किया था। आए मुझे बुखार आया, मैंने अपनी दवाई नहीं ली कि बच्चे पे असर ना हो। उठती बैठती थी, सोती जागती थी, एहतियात किया करती थी कि बच्चे पर असर ना हो। 9 माह मेरा दर्दों में गुजरा, तरह तरह की तकलीफों में गुजरा। रात को सोती नहीं थी, दिन को नींद नहीं आती थी, दर्दों की वजह से सारा दिन सारी रात कुर्लाती रहती थी। तरह तरह की तकलीफों ने मुझे आन घेरा, तरह तरह की बीमारियों ने मुझे आन घेरा। मैंने दवाई नहीं खाई इस सोच की बुनियाद पर कि बच्चे पर असर ना हो। ज्यादा खाना छोड़ दिया, ज्यादा पीना छोड़ दिया। दर्द से सारा दिन सारी रात कुर्लाती रहती थी। मैंने दवाई नहीं खाई कि बच्चे पर असर ना हो। और नादान, फिर मौत किसी अजियत देकर मेरी बेटी ने जन्म लिया। मौत किसी अजियत देकर मैंने बेटी को पैदा किया। मेरी बेटी पैदा ही क्या हुई? तू जालिम ने अभी अपनी बेटी को देखा ही नहीं, गुस्से से लाल पीला हो गया। और दर्द तो मैंने उठाए थे, तकलीफें तो मैंने बर्दाश्त की थी, चैन तो मेरा जाता रहा, करार तो मेरा जाता रहा, सुकून तो मेरा जाता रहा। तूने क्या किया था? 9 माह तक तकलीफें मैंने उठाई, तकलीफें मैंने बर्दाश्त की। 9 माह तक उसे मैंने उठाया। और तेरा क्या चला गया था? कौन सा नुकसान तेरा हो गया था कि तूने मेरी मासूम बच्ची को अभी देखा ही नहीं, नफरत भरी निगाहों से उसे बेड पर फेंक दिया। जवानों, फरिश्ते रोए नहीं कुर्लाए होंगे कि जब जालिम बाप ने मौका पाकर 7 दिन की बच्ची को 5 गोलियां मार दी। जब पहली गोली बच्ची को लगी होगी तो बच्चे ने कहा होगा, फरियाद तो की होगी, मेरे बाप इतना जुल्म तो ना कर, मुझे ना मार। जब तू थका हुआ दफ्तर से शाम को घर आएगा, मैं तेरे जूते उतारा करूंगी, मैं तेरे जूते पॉलिश किया करूंगी, मैं तेरे कपड़े धोया करूंगी, मैं तेरी नौकरानी बन के रहूंगी, मैं तेरी जर खरीदी गुलाम बन के रहूंगी, सारी जिंदगी तेरी नौकरी करती रहूंगी। मेरी जान मुझे बख्श दे, मुझे ना मार। जब दूसरी गोली बेटी को लगी होगी, मासूम बच्ची को लगी होगी, उसने नन्हे नन्हे हाथ तो जोड़े होंगे बाप के आगे, तोतले लहजे में कहा तो होगा, मेरे बाप मुझे ना मार, मेरे मरने से पहले मेरी माँ मर जाएगी। मेरे पैदा होने से पहले मेरी माँ ने जो छोटे छोटे कपड़े सिले थे, मेरे जाने के बाद वो छोटे छोटे मेरे सिले हुए कपड़े मेरी माँ को जला के राख कर देंगे, मेरी माँ को मार डालेंगे, मेरी माँ को पागल कर देंगे। मेरे पैदा होने से पहले मेरी माँ ने मेरे लिए जो खिलौने लेके रखे थे, खिलौने खरीद के रखे थे, मेरे मरने के बाद उन खिलौनों की छन छन आपको बहुत रुलाएगी मेरे बाप। उन खिलौनों की छन छन
آپ کو بہت تڑپائے گی میرے باپ، جب آخری گولی بچی کو لگی ہوگی، معصوم بیٹی کو ظالم باپ نے جب آخری گولی ماری ہوگی تو معصوم بچی نے ایک بار باپ کا چہرہ دیکھا ہوگا، باپ کی آنکھیں بھی دیکھی ہوں گی، اس کے بعد عرش والے کو بھی دیکھا ہوگا، عرش والے کے آگے مالک کے آگے شکایت بھی کی ہوگی، اور میرے کریم رب تو نے کس طرح کے باپ کے پاس مجھے بھیج دیا جس کو میں پسند ہی نہیں تھی، تو نے کس طرح کے ظالم باپ کے پاس مجھے بھیج دیا، میں تو رحمت بن کر باپ کے پاس گئی تھی، ایسے باپ کے پاس گئی جس نے مجھے قبول ہی نہ کیا، مجھے ٹھکرا دیا۔ بیٹی نے کہا ہوگا باپ کوئی بات نہیں، میں آپ کو پسند نہیں آئی، کوئی بات نہیں، آپ نے میری جیسی رحمت کو قبول نہ کیا، چلو اس جہان میں نہیں اگلے جہان ضرور ملاپ ہوگا، اگلے جہان میں آپ کو ضرور جی بھر کے دیکھوں گی کہ یہ میرا باپ ہے، اس نے مجھے مارا ہے۔ اور باپ سن یہ بھی کہتے ہوئے میں جا رہی ہوں، میں بیٹی ہوں نا، میں بیٹی ہونے کا حق ادا کروں گی، قیامت کے دن اس وقت تک خود جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک تجھے جنت میں نہیں لے کے جاؤں گی، کیونکہ یہ میرے کریم نبی کا فرمان ہے۔ بیٹی اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے جوانوں، میرے کریم نبی نے فرمایا بیٹی رحمت کا دروازہ ہے، بیٹی جنت کا ذریعہ ہے، بیٹی دوزخ کی ڈھال ہے۔ خدارا جن جن کے گھروں میں بیٹی پیدا ہوئی ہے وہ لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ میرے کریم نبی کے گھر میں سب سے پہلے بیٹی نے ہی جنم دیا تھا، جس کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا تھا، کہ ساری کائنات جس نبی کے استقبال کے لیے کھڑی ہے، وہ نبی اگر استقبال کے لیے اٹھے ہیں تو پیاری بیٹی کے استقبال کے لیے اٹھے۔